Are you one of those who faces a lot of problem in cue card development when you are preparing for your IELTS speaking? If yes, this video is for you. अक्सर ये देखा गया है कि स्टूडेंट्स को IELTS की क्यू कार्ड प्रिपरेशन में बहुत प्रॉब्लम आती है. सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये आती है कि दे कैन नॉट थिंक ऑफ इनफ मटीरियल विच कैन बी स्पोकन फॉर मोर देन 1.5 up to 2 minutes, right? Which is required in IELTS speaking part 2. So there are two problems which are normally seen. Those problems are, first of all, they are not able to think of the story. Story, अब आप कहेंगे story कहाँ से आई? Well, that is very much desired in IELTS Q card कि आप एक story form में अपना Q card present करें, जो normally students नहीं करते बहुत सारे Q cards में. There are certain Q cards like the ones I have taken up today. A person you follow on social media, a person who has influenced you in your life. अब जब इस टाइप के क्यू कार्ड्स डेवलप करने हो तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे हम छोटे होते एसेज करते थे ना, माय मदर, माय बेस्ट फ्रेंड. स्टूडेंट्स मोस्टली एंड अप प्रिपेयरिंग क्यू कार्ड्स लाइक दैट. I follow this and this person and he is this, he is that, he is very nice, he does this. That's it. The problem is that the cue card doesn't turn out to be very impressive or interesting to, listen to. It's a conversation, right? When you are speaking to the examiner, it's a conversation. So conversation means one person is speaking and the other person is listening. So it is must that you should create some interest. So what is suggested is that you should create a situation. जहाँ पे भी किसी भी पॉइंट पे आप सिचुएशन क्रिएट करें, कोई कहानी सी बनाकर उसे अगर प्रेजेंट करें तो वो बहुत अच्छा क्यू कार्ड माना जाता है. एंड इट इज हाई स्कोरिंग क्यू कार्ड. आप सोच रहे होंगे कि अब मैं बोल रही हूँ कि स्टोरी क्रिएट करो, सिचुएशन क्रिएट करो. अरे भाई, सिचुएशन क्रिएट करनी कैसे है? आई एम गोइंग टू टेल यू. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू टुडे इज आई एम गोइंग टू शेयर वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ माई क्लास. एक्चुअली व्हाट आई हैव डन इज मैंने जो अपनी क्लासरूम प्रोसीडिंग को रिकॉर्ड किया है. हाँ, उसमें एक डिसएडवांटेज जरूर रहेगा, दैट आई एक्सेप्ट दैट यू विल नॉट बी एबल टू सी मी और माई क्लास स्टूडेंट्स. You will only be able to see the screen of my flat panel and you will be able to listen to our conversation. लेकिन उससे आप सीखोगे बहुत. कैसे? क्योंकि जब आप एक एक्चुअल क्लासरूम सिचुएशन को आप महसूस करेंगे, you will feel yourself as a part of my class. उससे क्या बेनिफिट होगा? You will learn कि नेचुरली बच्चों के दिमाग में किस तरीके के ख्याल आते हैं, क्या क्या आइडियाज हो सकते हैं और उनसे स्टोरी कैसे बन सकती है, और एक ही क्यू कार्ड की स्टोरी 2 क्यू कार्ड्स में कैसे फिट हो सकती है. सो ये सारी एक डेमोन्स्ट्रेशन है. आई हैव नॉट planned this video. I have not pre-recorded anything. It's just my habit of recording my classroom proceedings. So let's go straight to my class. Any thoughts on this? Do you follow anyone on social media? Must be following. Some actress, singer, any spiritual leader. Whom do you follow? जल्दी बोलो, फिर अपन स्टोरी बनानी है ना. हाँ जी, because first question is about it only, ना, who he or she is. You all use social media, so whosoever you follow, you can simply talk about that person. एक चीज माइंड च रखियो, एक ही ਤੁਹਾਡੀ स्टोरी ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ someone who has influenced you in your life. Same story can be presented there with just a bit of change in the beginning. Follow on social media ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ there is one person I would like to talk about who has influenced me a lot. Kamal, ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ follow? Parmeshwar, okay. How do you know about him or her? किਵੇਂ पता लग गया कि कोई परमेश्वर वर्मा भी हैगा? टीवी पे देखा, इन सब मूवी. हाँ जी. ओके. फिर
फिर इनकी किताब मूवी आई टीवी पे देख ली, फिर इंटरव्यू। अच्छा इंटरव्यू ऑन टेलीविजन, ओके ਉਹਨੇ ਉਸ ਚ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਟਰਗਲ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਬਹੁਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ ਸਟਰਗਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਐਂਡ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਡਾਊਨ ਟੂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਸਟਾਰਟਡ ਫॉलोइंग हिम ऑन which platform? Instagram. Okay, so next is about what he or she posts on social media. What does he post? His own life reels or like something else related health? Related to health. He posts some pictures or videos or reels, like what? Both. Okay, so you can describe those. ठीक है, all right. Then why you follow? ठीक है, एक बार influence हो गया इस करके, because he influenced. And what else do you like about him or his posts? Good personality. Good personality, okay. What else? Is there any thing about his personality, some personality traits, so that we can work on some personality words? Personality describe only words use कर सकते हैं, like what kind of person is he? Kind-hearted person. Kind-hearted, okay. और kind-hearted और बस पर्सनैलिटी वर्ड्स बोलो, कोई भी किसी अच्छी छवि ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ यूज ਕਰਦੇ ਹੋ, some good personality traits. Nature, अच्छा nature, good nature. Okay, we need some better words for IELTS, ना? चलो, I'm just writing it here. What you are saying, good nature. What else? कुछ और? needy person की help कर। Okay, yeah, helps needy, right? Needy नहीं और alternative word, वैसे तो needy भी ठीक है। Downtrodden, ऐसे भी नाल चल रहे हैं ना? Downtrodden और underprivileged people, ठीक है, कोई भी बोल सकते हो, no problem। आगे और कोई personality word? Down to earth नहीं पता? Down to earth पता क्या होता है? निमाना, ठीक है, मतलब सक्सेस हेड तक नहीं पहुंची हुई है, स्टिल दे आर। यू कैन ऑल्सो यूज वर्ड्स लाइक हम्बल, ठीक है। ऑल्दो बीइंग अ सेलिब्रिटी किया वो होने ना, जो कोई भी वर्ड आ सकता है। ही इज अ डाउन टू अर्थ पर्सन और ही इज really down to earth, ठीक है जी, okay. Then let's talk about this again. हाँ जी, so how will you talk about it? How will you start? 2 minutes आराम नाल बोल सकिए, and I always say there should be situation, है ना? जे तो तुसी ऐसे तो शुरू कर दोगे ना, I am going to talk about a person, ठीक है, whom I follow on social media. That person is Parmesh Verma. I saw his interview, so I came to know about him. Then he posts this on social media. I started following him on Instagram. He posts this. ये ऐਵੇਂ लगेगा कि मैं उसका ऐसे सुना रहे हो, not a cue card story kind of thing. So situation ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? Situation ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ वाला how do you know about him or her, ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? I remember one day करके, है ना? I remember one day I was doing something and I just heard someone, who was, in an interview, speaking in an interview on television. My father was watching it. Situation up. Yeah, my brother was watching it. Okay, he was a huge fan already. So, but I had never watched any program. So that was the first time when I saw him talking on TV, and he told about his struggles and hardships of life. Okay, and I got so influenced by him that I started to Google about him. Google कर दिया आपको? ठीक है, I read his biography, like who he is, what works has he done, what movies has he acted in. सारे phrases आ रहे हैं, movies बारे देखा, his songs. Then I watched a few of his films. I really loved his acting. कहानी जी बन रही है ना? It's not like कि मैं तो नो सुना रही है ऐसे, he is this, he is that. No, you have to create a story kind of thing. ठीक है, और क्या बोलोगे फिर? After that,
I also started following him on the Instagram. Okay? Every day when my day starts, I start my day by my day starts with his posts. Yeah, I start my day by looking at his posts, like what he has posted. I'm always very eager to know. I'm very curious to see his posts. Why? Because देखो ना रीजन भी आ जाएगा. Explain why you follow him or her. Unnecessary ऐਵੇਂ ही कोई irrelevant videos नहीं पाਉਂदा वो. He posts relevant, useful content. Content word use कर लो on the media. The media के नाम Instagram. You have already named it. So the media will be referencing. ठीक है? फिर की पाਉਂदा है कि posts health related जिਵੇਂ ਤੁਸੀਂ क्या videos. I don't follow him. और की करदा वो health related videos, posts, tips to maintain health, maybe something related to workout. Okay, so I got so influenced that I also became health conscious after following him. यही होता है एक influence वाले को भी नाली लेके चल रही है मैं दोनों जगह कवर करना है ना. So key influence हुआ. Previously I was really a lazy, inactive person in my life, but after I started following him or her, I got so influenced that I also became health conscious and I started working out or doing some exercises early in the morning. I started waking up early in the morning and doing some exercises, like whatever way you want to explain. Okay? So this is one person whom I regularly follow on social media and I like him so much that I have also got, I also try to inculcate those values and this kind of his daily regime or daily routine that he follows in his life. मैं अपनी लाइफ च उन्हों अडॉप्ट करन दी कोशिश करती हां या डेवलप करन दी कोशिश करती हां वो उस तरह दी वैल्यूज. ठीक है, ਉਹਦੀ पर्सनैलिटी ट्रेट्स ਤਾਂ ਚਲੋ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰੋਗੇ, like he is this kind of person. ठीक है, when I started following him, I got to know that he is a very humble person despite being a celebrity. He is not a high-headed person. High-headed किहड़ा ਹੁੰਦਾ दिमाग चढ़िया ਹੁੰਦਾ जिवें high-headed जिन कहते ना सक्सेस चढ़ गई है. हाई-हेडेड गुस्से वाला भी ਹੁੰਦਾ है. कई सेलिब्रिटीज ने चिड़चिड़े हो जाते हैं कई बारी कि फोटो तक नहीं खिंचाते किसी नाल. तो हाई-हेडेड कह लो या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कोई नहीं लगता है ना. He has that kind of image. He has a very clean image कह सकते हो in the industry. Got it? पंजी की स्टोरी. ओके, बनाओ जरा 2 मिनट लाओ ते हुणे सुनाइए फटाफट. जिन्हों भी फॉलो करते हो, you can use similar kind of situation and fit in your person, like whom you follow, and speak on it right away. Chalo, do it. I hope this video has helped you in understanding how to create a situation or a story in a cue card. इसी तरह के सिचुएशंस और स्टोरीज आप क्रिएट करके बहुत सारे डिफरेंट क्यू कार्ड्स बना सकते हैं. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको ये प्रोसीजर अच्छा लगा, अगर आपको मेरी मेथोडोलॉजी अच्छी लगी, तो इस वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा. और अगर आप कोई और क्यू कार्ड पे वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं स्पेशल आपके लिए वीडियो भी बना सकती हूँ या इसी तरह अपनी क्लास के रिकॉर्डिंग्स आपके साथ और शेयर कर सकती हूँ. लेकिन ये मुझ तक पहुंचाने के लिए आपको मुझे मैसेज या कमेंट करना पड़ेगा कमेंट बॉक्स में. और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि मैं जैसे ही कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ वो डायरेक्टली आपके पास पहुंच जाए. नोटिफिकेशन बटन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा. विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो टुडे. आई नो इट्स लॉन्ग बट definitely it will help you in your cue card preparation and in your IELTS speaking module preparation. So with this, Dr. MKS is signing off now. Bye bye. Have a nice day.